सर आवाज येतोय का कुठे सर? कंटिन्यू कर. सुरू करायचं मॅडम? Yes, sir. Yes, please. A very good afternoon to all of you. First of all, respected Dethe sir, Prashant Kothe sir, Principal Dhanvade National College, and Priti madam, coordinator for this program. I welcome you all. And a very good afternoon to all the participants of NEP 2020 Orientation and Sensitization Program, that is February 2025. That is 8 days online short-term course organized by Malviya Mission Training, Teachers Training Center of Rashtrasant Tukdoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, and in collaboration with Dhanvade National College, Nagpur. At the outset, I pay my humble homage to Dr. Panjabrao Deshmukh and Rashtrasant Tukdoji Maharaj. And I also welcome to Dr. CG Dethe sir, who is the director of Malviya Mission Teachers Training Center, Rashtrasant Tukdoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, and respected principal Dr. Prashant Kothe sir, Dhanvade National College, Nagpur, and the course coordinator, Dr. Priti Dharmik madam, in this inaugural session of orientation and sensitization program. As we know, this programs are being conducted by UGC to acquaint the challenges of NEP. Almost 100 overall 100 participants are registered for this program, and from Dhanvade National College and the other affiliated colleges of Rashtrasant Tukdoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. I welcome you all in this NEP 2020 Orientation and Sensitization Program. So, without wasting much time, I now request respected Principal, Dhanvade National College, and convener of this program, Dr. Prashant Kothe sir, for his inaugural speech. Sir. नमस्कार. आवाज येतो का? हाँ सर, येतो आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांना प्रथम अभिवादन करतो. आज UGC मालवीय मिशन ट्रेनिंग सेंटर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ यांचे संचालक माननीय डॉक्टर CG डेटे सर, या कार्यक्रमाच्या संयोजिका डॉक्टर प्रीती धार्मिक व डॉक्टर पराग जोशी, उपस्थित सर्व सहभागी प्राध्यापक, आपण आज सर्व ज्या कार्यशाळेच्या निमित्ताने या ठिकाणी जमलो ती म्हणजे NEP 2020 च्या अनुषंगाने असलेले जे प्रश्न आहे किंवा त्या संदर्भातली जी माहिती आहे ती सर्वांना व्हावी या अनुषंगाने आपण सर्व या ठिकाणी जमलेलो आहोत. एक मिनिट, सॉरी. तरी या कार्यक्रमाला नागपूर विद्यापीठाच्या अनुषंगाने जे आपण या ठिकाणी घेत आहोत त्या अनुषंगाने हा 8 दिवसीय जो फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आहे, या फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या अनुषंगाने जो UGC द्वारे 15-15 दिवसाचे जे शॉर्ट टर्म कोर्स घेतले जातात त्या अनुषंगाने या ठिकाणी मालवीय मिशन ट्रेनिंग सेंटर यांचे संचालक डॉक्टर CG डेटे सर आणि डॉक्टर प्रीती धार्मिक यांच्या माध्यमाने हा कार्यक्रम धनवड नॅशनल कॉलेजच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी होत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून NEP 2020 ही योजना अनेक विद्यापीठात लागू करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने महाविद्यालयामध्ये नवीन अभ्यासक्रम,
नवीन योजना लागू करण्यात आल्या, त्या सर्व नवीन योजनांद्वारे जी आव्हाने आपल्यासमोर आहेत, की ज्या आव्हानांमुळे बऱ्याच अडचणी आपल्या पुढे येतात, बऱ्याच कन्सेप्ट अजूनपर्यंत आपल्या पूर्ण झालेल्या नाही आणि त्यामुळे त्याची ओळख होण्याच्या अनुषंगानं, त्या कन्सेप्ट क्लिअर होण्याच्या अनुषंगानं या कोर्सचं आपण या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे. त्यासाठी समन्वयक प्रीती धार्मिक यांनी एक पुस्तिका सुद्धा आपल्या व्हॉट्सअपवर त्या संदर्भात टाकलेली आहे, ती सुद्धा उपलब्ध झालेली आहे. तर त्याबद्दल सुद्धा मॅडमचे धन्यवाद आणि त्यातून सुद्धा आपल्याला बरीच माहिती उपलब्ध होणार आहे. या कार्यक्रमात धनवट नॅशनल कॉलेजचे जवळजवळ सर्वच प्राध्यापक सहभागी आहेत आणि त्याचबरोबर इतर महाविद्यालयातील प्राध्यापक सुद्धा या वर्कशॉपला या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचे मी या ठिकाणी स्वागत करतो. त्यांना निश्चितच हा कोर्स हे फलदायी ठरेल आणि आपल्या ज्या संकल्पना आहेत, ज्या अजूनही क्लिअर झालेल्या नाही, त्या दूर होण्याच्या दृष्टिकोनात क्लिअर होण्याच्या अनुषंगानं मदतनीस ठरेल. त्याबद्दल मी सर्व प्राध्यापकांना शुभेच्छा देतो. हा कोर्स आमच्या धनवट नॅशनल महाविद्यालयाच्या द्वारे संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी आयोजित केला, त्याबद्दल या मालवीय मिशन ट्रेनिंग सेंटरचे संचालक डॉक्टर देठे सर आणि समन्वय डॉक्टर प्रीती धार्मिक, त्याचबरोबर या वर्कशॉपला जे अनेक मान्यवर मार्गदर्शन करणार आहे, त्या सर्वांचं मी महाविद्यालयाचा प्राचार्य म्हणून आभार मानतो आणि धन्यवाद सुद्धा देतो. आणि जवळजवळ या कार्यशाळेला जे 100पेक्षा जास्त, जवळजवळ 100 सहभागी या ठिकाणी सहभागी झाले, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि आभार सुद्धा मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you very much, sir, for your introductory remarks. Now, I request Dr. C.G. Dethe, sir, convener of this program and director of Malviya Mission Teachers Training Center, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, for his inaugural speech and announcement of the inauguration of this program. Sir, please. Sir, kindly unmute. Thank you, Dr. Parag Joshi. I hope now I am audible to all of you. Yes, sir. Yes. Yeah, thank you. Chief guest of this program, Dr. Prashant Kothe, Principal, Dhanwate National College, Nagpur. The coordinator of this program, Dr. Preeti Dharmik, and Dr. Parag Joshi, and dear all participants. It gives me basically immense pleasure to be amongst you on this occasion of inauguration of the short-term course on NEP orientation and sensitization, which is basically a mission mode program by University Grants Commission for sensitizing the faculty fraternity on NEP 2020, that is New Education Policy 2020. जसं आत्ता सरांनी आपल्या इनॉग्रल रिमार्क्समध्ये सांगितलेलं आहे की NEP 2020ची काय आवश्यकता आहे आणि आपण सगळ्यांनी ह्या कोर्समध्ये रजिस्ट्रेशन केलं, सगळ्या स्टाफनी आपल्या. याबद्दल मी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग तर्फे मी सरांचे आणि पर्टिक्युलरली ऑल दी पार्टिसिपंट्स यांचे आभार मानतो की त्यांनी स्वतः इनिशिएटिव्ह घेऊन सगळ्या स्टाफला ह्या प्रोग्राममध्ये सहभागी होण्याची एक संधी प्राप्त करून दिली. म्हणजे कसं आहे की आपला एक लीडर कसा असावा याचं एक उत्कृष्ट एक्झाम्पल सरांनी सेट करून दिलेलं आहे आणि त्या माध्यमातूनच एक NEP 2020 नवीन शैक्षणिक धोरण जे आपलं महाराष्ट्र राज्यामध्ये आता राबविल्या जात आहे त्याच्याबद्दलची तळमळ सरांना जी आहे आणि ह्या कोर्सच्या माध्यमातून त्याची माहिती आपणा सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याची जी एक सरांमध्ये तळमळ किंवा उत्सुकता आहे, खरंच ती वाखाणण्याजोगी आहे आणि ह्या प्रसंगी मी सरांचे सुद्धा खूप खूप आभार मानतो.
In fact, dear all participants, it is indeed need of a time to basically know about, in-depth knowledge about the national education policy, because many a times it's happening that without getting thorough knowledge about the policy, we comment so many things about the policy, and then it goes in a wrong direction. Many a times it's happening unless until we study this particular policy document thoroughly, uh, then and then only you will be able to appreciate it basically. म्हणजे आपण काय करतो आहे की आपल्याला त्याच्याबद्दल थोडीफार इकडनं तिकडनं माहिती मिळते आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावरच्या कमेंट्स करतो. परंतु हे खरं आहे की इम्प्लिमेंटेशनमध्ये NEP 2020च्या बऱ्याचशा डिफिकल्टीज आहे, बिकॉज द व्हेरी नेचर ऑफ दिस पॉलिसी डॉक्युमेंट इज डिसरप्टिव्ह इन अ सेन्स की ते काही ग्रॅज्युअल चेंज नाही आहे त्याच्यामध्ये. all of a sudden so many things are changing spontaneously, at a time basically. आणि त्याच्यामुळे असं होतं आहे की आपली संपूर्ण एज्युकेशन सिस्टम जी आहे ती हलविल्या गेली आहे एकंदरीत. बऱ्याचशा फ्रंट्सवर आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी माहिती नाही, मुलांना माहिती नाही, आणि आपण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करणं सुरुवात केली आहे. तर हे थोडं लेट आहे ॲक्च्युली की आपल्याला ह्या प्रोग्रामच्या बद्दल माहिती किंवा NEP 2020 बद्दलची जी माहिती आहे थोडी लेट मिळते आहे. हे जर आधी असतं तर अजून याचं ॲप्रिसिएशन वाढलं असतं असं मला वाटते. बट नेव्हर द लेस आय थिंक इट इज नेव्हर टू लेट ऑलवेज. आणि आता आपण NEP 2020च्या ह्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून ह्या पॉलिसीच्या बद्दल ज्या काही आपल्या क्वेरीज आहे, ज्या काही डाऊट्स आहे, हे सगळेच्या सगळे डाऊट्स तुम्ही विचारू शकता. चांगले रिसोर्स पर्सन्स वी आर ट्राईंग टू इन्व्हाइट दोज हॅव्हिंग व्हेरी गुड नॉलेज अबाउट द पॉलिसी डॉक्युमेंट. आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला इम्प्लिमेंटेशनमध्ये कसं पुढे जाता येईल किंवा आपल्याला कुठल्या डिफिकल्टीज आल्या त्या आपण कशा रिझॉल्व्ह करायच्या, याचे काही सोल्युशन्स आपल्याला ह्या कोर्समधनं मिळतात का, हे सुद्धा बघणं एक आवश्यक आहे. बिईंग व्हेरी रिस्पॉन्सिव्ह अँड रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर ऑफ दिस होल एज्युकेशन सिस्टम ॲज सच. म्हणजे टीचिंग फ्रॅटर्निटी इज अ मेन पिलर, आणि टीचिंग फ्रॅटर्निटी इज प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॉलिसी. आणि म्हणून मला असं वाटतं की खूप सेन्सिटिव्हली हा प्रोग्राम आपण अटेंड करावा. लेट देअर बी मेनी इंटरॅक्शन्स ड्युरिंग दी सेशन्स. यू आस्क मेनी क्वेरीज, बी अटेंटिव्ह. Many a times it so happens that I have been into such programs as a resource person, but the response from the other side is lot of times discouraging kind of thing. तर मला असं वाटतं की आपण आता सरांनी सुद्धा एवढा चांगला इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे, तर ह्या संधीचा फायदा घेऊन आपण सेन्सिटिव्हली ह्या प्रोग्राममध्ये सहभाग घ्यावा आणि ह्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून ज्या काही आपल्याला क्वेरीज आहे त्या रिसोर्स पर्सनच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. बऱ्याचशा वेळेस आपण फक्त लॉग इन होतो आणि त्याच्यानंतर आपण ह्या प्रोग्रामबद्दल विसरून जातो. इट्स सो हॅपन्स मेनी अ टाइम्स. पण कसं आहे की आपल्याला खरंच त्याच्याबद्दल उत्सुकता आहे, जाणून घ्यायची इच्छा आहे, तर मला असं वाटतं की आपला व्हिडिओ ऑन करून आपण त्या कोर्समध्ये सहभाग घेतला तर त्याच्यातनं जास्त चांगल्या पद्धतीने मोटिवेशन पण रिसोर्स पर्सनला मिळेल. त्याला एक ही ऑर शी विल गेट एनकरेज टू इंटरॅक्ट विथ यू, आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला एक चांगलं सेशन तिथे घेता येईल. तर ऑन दिस ऑकेजन आय वुड अर्ज ऑल द पार्टिसिपंट्स टू बी पंक्च्युअल ड्युरिंग ऑल दीज 8 days ऑफ प्रोग्राम. आणि तसंही इतक्या सोप्या पद्धतीने याचं ऑर्गनायझेशन झालेलं आहे की विच विल नॉट इंटरफिअर इन युअर डेली ऑर डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज. कारण आपलं सेशन साधारणतः मला वाटते 4च्या नंतर सुरू होत आहे आणि ते 7 पर्यंत आहे. तर बाय 4 o'clock आय थिंक ऑलमोस्ट ऑल द ॲक्टिव्हिटीज, कॉलेज ॲक्टिव्हिटीज और रुटीन ॲक्टिव्हिटीज ज्या काही आपल्या असतात त्या आपण संपवू शकतो.
आणि त्याच्यानंतर सेशनमध्ये आपण चांगल्या पद्धतीने भाग घेऊ शकतो. मला असं वाटतं की ही खूप संधी चालून आलेली आहे आपल्याकडे आणि ह्या सुवर्ण संधीचा आपण सगळ्यांनी फायदा घ्यावा. ऑन द कॉन्ट्ररी, आय वुड ऑल्सो अर्ज ऑल ऑफ यू की टेल युअर अदर पियर्स, युअर कलिग्स टू बी अ पार्ट ऑफ धिस प्रोग्राम. आता जर नाही होऊ शकत असेल ते सहभागी या प्रोग्राममध्ये, तर पुढे अजून दर 15 दिवसांनी आपण असे सेशन्स घेतोच आहे आणि ह्या सेशन्सच्या माध्यमातून एक मिशन मोडवर युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशननी आपल्याला संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यांची एक फिलॉसॉफी आहे की आपल्या देशामधले जेवढी काही टीचिंग फ्रॅटर्निटी आहे त्या सगळ्यांपर्यंत ही पॉलिसी डॉक्युमेंटच्या बद्दलची चर्चा व्हावी आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या पॉलिसीचे फायदे कसे पोहोचवता येईल याची सुद्धा चर्चा ह्या सेशन्समधनं व्हावी असा त्याच्या मागचा एक उद्देश आहे. तर मला असं वाटतंय की हे सगळं याचं सक्सेस ऑल डिपेंड्स अपॉन युअर पार्टिसिपेशन बेसिकली. अनलेस अंटिल यू कम फॉरवर्ड अँड चांगल्या पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये भाग घेणार नाही तोपर्यंत ती फिलॉसॉफी युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनची सक्सेसफुल झाली असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. सो यू विल रिअली अप्रिशिएट की याच्यामध्ये 8 थीम्स दिलेले आहे आणि 8 थीम्सवर जवळपास सर्वच कॉम्पोनंट्स जे आहे आपल्या पॉलिसीमध्ये दिलेले ते सगळेच्या सगळे कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि म्हणून आणि आपली ही काळाची गरज आहे. म्हणजे तुम्हाला साधं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर बघा म्हणजे आत्ताच नागपुरात एक विंटेज कारचं आयोजन झालं होतं आणि रमन सायन्स सेंटरला आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल ही गोष्ट आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या जुन्या कार ज्या आहे त्या प्रदर्शित करण्यात आल्या होत्या आणि त्या कार समजा तुम्ही व्हिजिट केल्या असेल तर तुम्हाला त्याचं कन्स्ट्रक्शन, त्याचं टायर, त्याचे चेसिस, त्याचं डायल हे सगळं जर बघितलं तुम्हाला खूप काही फरक आत्ताच्या कारमध्ये आणि त्या कारमध्ये जाणवलेला असेल. म्हणजे तेव्हाचे जे स्पीडोमीटर आहे ते अॅनालॉग मीटर आहे, त्याचे म्हणजे जे काटे आहे ते अॅनालॉग पद्धतीने फिरायचे, परंतु आता डिस्प्ले होतो, तुम्हाला डिजिटल डिस्प्ले आहे. सो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस आणि ह्या टेक्नॉलॉजीमध्ये इतके चेंजेस झालेले आहे की आता आपण म्हणतो की वायरलेस की ओपनिंग किंवा टर्न ऑन टर्न ऑफ बिफोर यू एंटर इन द कार, यू कॅन कीप युअर कार ऑन, AC ऑन, सो मेनी थिंग्स आहे की नाही. म्हणजे ही सगळी जी टेक्नॉलॉजी आहे ह्या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपल्याला असं बघायला मिळतं की इंडस्ट्रीमध्ये खूप सारे चेंजेस झालेले आहे. आपण ज्याला आज इंडस्ट्री रिव्होल्युशन 4.0 म्हणतो आणि ह्या इंडस्ट्री रिव्होल्युशन 4.0च्या माध्यमातून तुम्हाला असं जाणवेल की प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मे इट बी हेल्थ सेक्टर, मे इट बी ॲग्रिकल्चर सेक्टर, मे इट बी ऑटोमोबाईल सेक्टर और फॉर दॅट मॅटर एनी अदर सेक्टर. ओके, तर त्या प्रत्येक सेक्टरमध्ये खूप सारे बदल झालेले आहे. आपलं एज्युकेशन हे सुद्धा एक सेक्टर आहे आणि एज्युकेशन सेक्टरमध्ये सुद्धा हे बदल होणं आवश्यक आहे. आतापर्यंत आपण त्या जुन्याच पद्धतीने जी आपली ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ टीचिंग किंवा जे होतं त्याच पद्धतीने आपण जर शिकवत राहिलो तर मला असं वाटते की वी विल नॉट बी रिलिव्हंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टुडेज टाइम ॲज सच. म्हणजे आजच्या काळामध्ये जर आपण जुनी पद्धत अवलंबत राहिलो तर आपण कंटेक्स्टच्या बाहेर होऊ. कारण की आपल्याकडे जे इनपुट येत आहे मुलांचं ते खूप टेक्नोसॅव्ही आहे, त्यांना टेक्नॉलॉजीबद्दल माहिती आहे, त्यांना इतर बरेचसे रिसोर्सेस अवेलेबल आहे की ते फक्त आपल्या टीचरवर अवलंबून नाही आहे. म्हणून टीचरचा रोल सुद्धा त्याच्यामध्ये बदललेला आहे. वी आर नाउडेज कॉलिंग टीचर ॲज अ फॅसिलिटेटर वगैरे वगैरे. तर हे सगळे बदल जे घडत आहे हे बदल जे इंडस्ट्री सेक्टरला होत आहे किंवा इतर सेक्टरला होत आहे तसे बदल आपल्या शैक्षणिक धोरणामध्ये सुद्धा व्हायला पाहिजे होते. कारण ही जवळपास पॉलिसी जी आहे ती 34 वर्षानंतर आली असं आपण म्हणतो. नेव्हरदलेस म्हणजे आपण असं जरी म्हणत असू परंतु त्याची खरंच नितांत आवश्यकता होती ह्याच्यासाठी की बाहेरचं जग खूप बदललेलं आहे. परंतु बाहेरच्या जगामध्ये, ज्या बदललेल्या जगामध्ये जर आपल्याला आपले स्टुडंट्स इफ यू वॉन्ट टू फिट देम, ओके, तर त्या स्टुडंट्सला सुद्धा तशा पद्धतीचे स्किल्स देणं आवश्यक आहे.
आणि ते स्किल्स कसे येतील तर आपल्या करिक्युलम मधनं, आपल्या सिलेबस मधनं, आपल्या वे ऑफ टीचिंग मधनं, आपले पॅडागॉगी आपण जे यूज करतो त्याच्यामधनं, ते सगळे बदल त्या मुलांपर्यंत पोहोचवायचे आहे. आणि म्हणून ही खरंच काळाची गरज आहे, कारण आपण आपला करिक्युलम आज बदलवला नाही तर मला असं वाटतं की इंडस्ट्री अकॅडमिया जो एक गॅप निर्माण झालेला आहे, तो गॅप कमी होणार नाही, उलट तो वाढत जाईल. आणि म्हणून आपण एका पद्धतीने असं ओरडत राहतो की आपण मुलांचं एम्प्लॉयमेंट करू शकत नाही आहे किंवा मुलांना जॉब मिळत नाही आहे. ह्याचं कारण हेच की जी रिक्वायर्ड स्किल्स आहे इंडस्ट्रीमध्ये किंवा कोणत्याही सेक्टरमध्ये, आतापर्यंत तुम्हाला फक्त म्हणजे इंडस्ट्रियल सेक्टरच आपण असं गृहीत धरत होतो, परंतु बाकी सेक्टर सुद्धा म्हणजे आर्ट्स, कॉमर्स ह्याच्यामध्ये सुद्धा टेक्नॉलॉजीचं इंटरव्हेन्शन झालेलं आहे. एज्युकेशनमध्ये सुद्धा टेक्नॉलॉजीचं इंटरव्हेन्शन झालेलं आहे. म्हणजे आज आपण टेक्नॉलॉजी यूज करून चांगल्या पद्धतीने लोकांपर्यंत शिक्षण पोचवू शकतो, रिमोट एरियामध्ये जाऊ शकतो. तर आणि ती काळाची खरं गरज आहे ॲक्च्युली, कारण आपल्याला इतका मोठा चंक स्टुडंट्सचा जर अकोमोडेट करायचा असेल तर टेक्नॉलॉजीचा उपयोग केल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही. याच्यासाठी कारण की आज आपला फक्त ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो आहे तो 30-35च्या दरम्यान आहे, परंतु आपल्याला 70-80 पर्यंत जायचं असेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, म्हणजे म्हणजे इलिजिबल स्टुडंट जे आहे 100 पैकी कमीत कमी 70-80 तरी मुलं शैक्षणिक स्ट्रीम मध्ये यायला पाहिजे, अशी जर आपली अपेक्षा असेल तर आता जे आपलं हायर एज्युकेशन मध्ये येणारे मुलं अराउंड 4.5 करोड्स आहे, त्याची संख्या कितीतरी वाढेल. आणि आपलं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या मुलांना अकोमोडेट करण्यासाठी सफिशियंट नाही. सो नियर फ्युचरमध्ये तरी पॉसिबल नाही. म्हणून आपल्याला टेक्नॉलॉजीचा हा उपयोग करावाच लागेल. आणि आपल्या टीचिंग फ्रॅटर्निटीला तर हे शिकून घेणं खूप आवश्यक आहे. म्हणून आय वुड ऑल्सो अर्ज ऑल ऑफ यू टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नॉलॉजीज इन द टीचिंग ॲज सच. आणि ह्याचे सुद्धा काही सेशन्स मला वाटते प्रीती मॅडमनी प्लॅन केलेले आहे, ते सुद्धा तुम्ही जाणून घ्या. बरंचसं काही बोलता येईल, परंतु वेळ अभावी मी अजून काही जास्त वेळ घेणार नाही. तसं मला एक दुसरं सेशन आहे, परंतु सरांचे खूप खूप अभिनंदन मी करतो की त्यांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन हा कोर्स इथे आपल्या सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिला. In fact, this is a very good initiative, a collaborative initiative between Dhanwate National College and our Malviya Mission Teacher Training Center, RTM Nagpur University. आणि असेच कोलॅबरेटिव्ह प्रोग्राम्स इतर कॉलेजेस सोबत सुद्धा करायची आमची इच्छा आहे आणि चालू पण आहे बऱ्याचशा ठिकाणी. तर मला असं वाटतं की ह्या माध्यमातून आम्ही जास्तीत जास्त आपल्या टीचिंग फ्रॅटर्निटी पर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करू. ही संधी सरांनी आम्हाला उपलब्ध करून दिली. आपणा सर्वांचे मनस्वी आभार परत. आणि एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द होतो. धन्यवाद. Thank you very much, sir. Thank you for your valuable words. We really appreciate your thoughts and thinking regarding the NEP. Thank you, sir. Now I'm thankful to thankful to both the respected dignitaries, Dr. Dethe sir and Prashant Kothe sir, for sparing their time for this inaugural session. And I am also thankful to Dr. Preeti Dharmik madam, who has the backbone of this program. And also thankful to all my dear colleagues for being participated of this NEP program. Thank you all. Now I hand over the session to Preeti Dharmik ma'am for the further proceedings. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, you, Kothe sir. Thank you, Dethe sir. Friends, we will proceed to our first session of this NEP 2020 orientation and sensitization program. Resource person is yet to join. We will wait for 5 to 10 minutes more and we'll start with the session. सगळ्या पार्टिसिपंट्सला माझा एक रिक्वेस्ट आहे की आपलं सेशन जेव्हाही सुरू होईल त्याच्या 5 मिनिटं आधी सगळ्यांनी जॉईन करायचं आहे. आणि बऱ्याच लोकांना बऱ्याच कामाच्या व्यापामध्ये कधी लक्ष राहत नाही, तर तुम्ही आपल्या ग्रुपमध्ये किंवा पर्सनल
पर्सनली तुम्ही तुमच्या सोबतचे जे कलिग्स आहेत त्यांना मेसेज टाकू शकता की आपलं सेशन सुरू झालेलं आहे. त्याच्यामुळे सर्व लोक त्याचा फायदा घेऊ शकतील आणि सगळे लोक एक सोबत जॉईन करू शकतील, जेणेकरून त्यांना सगळ्यांना त्याचा फायदा उपलब्ध होईल. म्हणून सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की जे लोक आपापल्या पिअर ग्रुपमध्ये मेसेज टाकून कन्व्हे करू शकतात तर त्यांनी प्लीज 5 ते 10 मिनिटं आधी कन्व्हे करावं आणि सेशन स्टार्ट करावं. तर प्लीज बाकी सर्वांनी त्याची नोट घ्यावी. थँक्यू. Yes, good afternoon friends. Resource person join हो चुके हैं. Let's begin with our very first session of this online NEP 2020 orientation and sensitization program. Yours is the 22nd batch of this program. Good afternoon, respected Devjani Roy ma'am. Roy ma'am, can you hear me? Good afternoon, ma'am. Yes, yes. Just give me 1 minute. I cannot locate my mobile. Huh? Yes, yes, Just please, 1 please. minute, 1 minute. प्रीति मॅडम थोड़ी प्रेझेंटी बद्दल एक इंस्ट्रक्शन देऊन द्याल ना पुन्हा प्लीज. हाँ, पार्टिसिपेंट आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली है आज की? That you have Yes, to ma'am. mark Yes, the ma'am. attendance of first session Yes, before 4 o'clock, and Yes, for ma'am. second session you have to mark after 7 o'clock. Okay? कर लिया अटेंडेंस. Yes, ध्यान से आपको मार्क करना है, भूलना नहीं है. 4 बजे वाले सेशन की 4 o'clock के पहले मार्क करेंगे और 7 बजे जैसे ही फ्री हो जाते हैं उस वक्त सेकंड सेशन की अटेंडेंस मार्क करेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. Good afternoon, ma'am. हाँ, यस, शुरू करेंगे मैम. जी बिल्कुल बिल्कुल. Okay. So friends, we are starting with the first theme of this NEP orientation and sensitization program, that is holistic and multidisciplinary education. To discuss this topic, we have among us respected Dr. Debjani Roy madam. I welcome you ma'am on behalf of UGC Malviya Mission Teacher Training Center of RTM Nagpur University. It's an honor to introduce respected Dr. Debjani Roy ma'am. She is currently heading the postgraduate department of geography, Nirmala College, Ranchi University, Ranchi. She has done her graduation in geography from Lady Bourbon College, Calcutta, and her master's and PhD from Calcutta University. She has been a national scholar throughout and completed her PhD with UGC fellowship. Madam has more than 22 years of experience in teaching at undergraduate and postgraduate levels. Besides academics, she is deeply involved in research work like guiding research scholars and doing research projects, as well as administrative work of the college and university. She is a RUSA nodal officer and NEP core committee member, as well as IQSC coordinator. Madam has authored 2 books, edited 2 books, co-authored 1 book, and contributed several research papers and chapters in books. So with this brief introduction, I once again welcome respected Dr. Debjani Roy madam, and I kindly request you madam to please start your session. Thank you, ma'am, for your introduction. And namaskar. Good afternoon to all the participants. Today I can see that there are around 60 participants, which is a very good number. मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन तो पहले ही दे दिया है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैडम के इंट्रोडक्शन में था कि मेरा 22 साल का अनुभव है.
मैडम, मैं आज ही सोच रही थी, मैंने स्टार्ट किया था इसको 2023 से और मैंने लिया था 2022 में ट्रेनिंग, तो उस समय 22 साल का था, अभी हमारा 25 साल हो Yes, yes, गया। yes. That's why I have mentioned more than 22 years. यस, बिकॉज हम लोग करते ही जा रहे हैं और आप यू आर वन ऑफ द पायोनियर्स जो ये स्टार्ट किए थे नागपुर यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्सिटीज के एचआरडीसी स्टार्ट किए, लेकिन आप उनमें से हो जो कि सबसे पहले इसको स्टार्ट किए, और ईश्वर की कृपा से आप इसको इतने अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यू आर कंटिन्यूइंग विद दिस, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और मैडम नहीं होती तो, प्रीति मैम नहीं होती तो शायद इतने सारे प्रोग्राम्स भी नहीं होते, हम भी नहीं होते। तो इसी के साथ मैं आज का ये जो सेशन है आप लोग सबका स्वागत करती हूँ और इस सेशन की शुरुआत करती हूँ। तो टुडे सेशन इज ऑन होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ NEP 2020। अब NEP 2020 अचानक से क्यों होलिस्टिक एजुकेशन की बात करता है, क्यों मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करता है? तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि हमारा अभी जो समाज का जो माहौल है, जो स्टूडेंट्स का माहौल है, दैट इज नॉट वेरी नॉट अ वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट्स लोग कुछ डिसअपॉइंटेड हैं, उनको सही तरीके से जॉब प्लेसमेंट्स नहीं हो रहा है। जहाँ जॉब और प्लेसमेंट्स है वहाँ पर भी उनको दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब प्रोफाइल, और they are not very content in life, and as a result they are driven into depression, and sometimes they are also they give up their job, they give up their life like this. So in short, the student's life is in a turmoil. That has been realized now. पहले के ज़माने में लोग पढ़ाई करते थे, why? Because they wanted to be educated, they wanted to be literate, and they could make a difference to the society. But lately education has become something that is like more like a business. There is a disconnect between what is being taught and what is being expected from them in the job market. Then there is a disconnect between the amount of effort in terms of money, in terms of time that is put in, and the output that is received. So in some cheezon say students are not very happy, their parents are also worried, and the teaching community also is worried about what is going on in the lives of the students. So we need to give a holistic approach to education, give some skill to the students so that they learn something apart from studying, उनको कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस दे। स्किल देना काफी नहीं है, सिर्फ हाथ का काम सिखाना काफी नहीं है। उस हाथ का काम वो कहाँ जाके करेंगे, किस माहौल में करेंगे, किन लोगों की मदद करने के लिए करेंगे, वो भी जानना बहुत जरूरी है। सो इट कम्स विथ एक्सपीरियंस एंड देयरफॉर एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ना माइंड, बॉडी, स्पिरिट सबको ताज़ा रखना है, सबको स्वस्थ रखना है। So they should have a healthy body, a healthy mind. And for that, things like yoga, wellness, all these things have to be taught to the students. Because स्कूल में तो फिजिकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, एक पीरियड रहता है, कॉलेज में आता है तो वो गायब हो जाता है। There are some creative things that students like to do, like art, drama, dance, singing. वो सब भी कॉलेज आते आते गायब हो जाता है, उनको भी बरकरार रखना है। तो इन सारी चीजों को अगर हम एक स्टूडेंट को दे सके, मे बी इन अ स्मॉल मॉड्यूल, बट हम दे सके, तो दैट इज होलिस्टिक एजुकेशन। तो हम उनको सिर्फ स्किल ही नहीं दे रहे, स्किल के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं। उनको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं। उनको सिर्फ हम एकेडमिक्स ही नहीं सिखा रहे, बट उसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दे रहे हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहे हैं, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज दे रहे हैं, वर्ल्ड सिटीजन बनाने के तौर तरीके समझा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स वी आर टीचिंग. So in short, we are giving them a total package, and that is holistic education. We have to give them rather. Now, why we have to give them, I've already told you. The students need support and help, and therefore we are giving it to them.
So NEP 2020 felt that India is a country which has a huge population, which is youth population. तो हम आप अक्सर देखेंगे इंडिया 2047 में ऐसा क्या होने वाला है इंडिया में? ऑफ कोर्स इंडिया विल बिकम द नंबर 1 कंट्री इन टर्म्स ऑफ population, and it will have the largest youth population also. अब ये यूथ किस तरह का यूथ बनेगा? Will they be skilled people? Will they be unskilled? Will they be morally upright? Will they be communicative? Will they be able to articulate well, communicate well? Will they be well versed in digital technology and the latest techniques? Will they have connect with the past or the rich heritage that India has? ये सारी चीजें जो है ये NEP के framers के मन में था, and that is why they sought holistic education. कि that is the prime focus of NEP 2020 to give holistic education. अब ये holistic education संभव ही नहीं है अगर आप education को multidisciplinary ना बनाएं. In order to give holistic education, we have to make our education system multidisciplinary. एक single discipline में हम holistic education expect नहीं कर सकते. So we have to make it multidisciplinary. और हमारे लिए reference क्या था? We had reference, we had ancient institutes in India. Ancient India had so many institutes. We had Nalanda, Takshashila, then Vikramshila, all those places had this multidisciplinary education being imparted on the students. And what happened? There was internationalization of education. Students came from all over the world, जो कि आज नहीं आते. अगर आज के डेट में हम देखें कि हमारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं इंडिया के अलावा, we will see that most of them come from our neighboring countries like Nepal, Bhutan, Afghanistan, and Burma, and so on and so forth. But people of developed countries, they don't come to India for education. Why? Because they feel that India's education system is not multidisciplinary in nature. And what is multidisciplinary? आप किसी एक डिसिप्लिन में स्टिक नहीं कर रहे हैं. आप उस डिसिप्लिन का मेन सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं, साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स ले रहे हैं जो उस डिसिप्लिन के नहीं हैं, बट दैट माइट बी ऑफ सम यूज टू द स्टूडेंट और दैट माइट बी ऑफ सम इंटरेस्ट टू द स्टूडेंट. सो दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी. दोनों का कॉम्बिनेशन जो है होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है. इस कॉम्बिनेशन को अगर हम सही तरीके से डिलीवर कर सके तो हमारे स्टूडेंट्स का लाइफ ही सुधर जाएगा, उनका भविष्य भी सही बन जाएगा. लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि इसको हम दें कैसे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी आर हैविंग सो मेनी प्रोग्राम्स. NEP का इतना सारा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो रहा है so that all of us understand the need and the value of such holistic and multidisciplinary education. So with this, friends, I will start sharing my screen, but I will expect questions and some interactions from all of you. मेरा सेशन डल और बोरिंग रहे ये कभी मैं नहीं चाहती हूँ. आप बेझिझक मेरे से सवाल कीजिए या मेरे को जो भी सजेशन देना है. If you want to give me any suggestion or if you want to share anything with me, I'm most willing to take it up. But please don't make it a boring class by staying quiet. Put your questions in the chat box, or even you can unmute and ask me questions. You can raise your hands and stop and immediately take up your question. So friends, I'm hoping for a very interactive session, and with this I'll start sharing my screen, and the title slide will be on your screen just now. I think you can see it. Yes. Yes. So I'll start with the essence of NEP 2020. NEP 2020 में दो शब्द जो I have highlighted, one is competency and another is outcome. So NEP 2020 is saying that we need to have competency based education, a system of education that will make students competent. यानी कामयाब ना बनाए लेकिन ऐसा बनाए कि वो अपने
काम खुद कर सके, दे आर कंप्लीटेड। और सेकंड जो है कि इसका आउटकम होना चाहिए। हर सिस्टम का, हर एजुकेशन का, हर ट्रेनिंग का एक आउटकम होता है। So if you don't have an outcome of a program, then better not keep the program. So NEP has thought of certain things, certain programs or certain ways of delivering education that will definitely give some outcome. और ये क्या आउटकम होगा? हर स्टेज में हमें क्या क्या चाहिए? We need knowledge and understanding of the subject. That is the primary thing that we need. Whenever we are in academics, we need to have knowledge and understanding. Otherwise, we cannot deliver. Second, जो important है, that is applying knowledge and understanding. Whatever knowledge and understanding is there, application of that knowledge and understanding is needed. अगर आप application नहीं जानते हैं, if you just know the theory part and you don't know how to apply that theory, then it is of no use. So application is very important. Third is making judgments. We are very scared to make judgments. हम लोग judgment देते ही नहीं है. हमें डर होता है कि if I make a judgment, if I pass a judgment, the other person may be annoyed. But ऐसा नहीं है. We should learn to make judgments. We should learn to judge things using our brain. Fourth is communication skills. Now, India or Indians are not very good at communication skills. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि ओनली आपको बोलना आना चाहिए. बोलने के साथ साथ लिखना एंड डिजिटल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द फिफ्थ वन इज लर्निंग स्किल्स, दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न सर्टेन स्किल्स that will help you to earn your livelihood, that will help you to settle in life. Now, there has been a transformation of education system from the 19th century to the present. So, आप जो आपके स्क्रीन में देख रहे हैं एजुकेशन 1.0 से लेके एजुकेशन 4.0 में हम पहुंच गए हैं. अब एजुकेशन 1.0 में 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी में जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टार्ट हुआ, दैट इज एजुकेशन 1.0. In that system of education, the teacher was considered to be a sage on stage. यानी टीचर जो थे वो एकदम गुरु माने जाते थे कि ओके टीचर इज गुरु, नो वन विल क्वेश्चन द टीचर. स्टूडेंट्स का रोल बहुत पैसिव होता था. स्टूडेंट्स चुपचाप बैठ के सुनते थे और टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता था. जो भी पढ़ाई की जाती थी, everything was textbook driven. And obviously such a system of education did not have much in terms of outcome. So education 1.0, as you can see on the screen, remained small, remained limited, okay? And obviously outcome of this education was that you became a literate from an illiterate. Then came 20th century and education 2.0 came with the start of 20th century. Here the role of a teacher changed. The teacher was not a sage on stage. Now the teacher became a guide and philosopher. So when the teacher becomes a guide and philosopher, the student becomes automatically a scholar. क्योंकि जो गाइड एंड फिलोसोफर होते हैं वो क्या करते हैं, पीएचडी वगैरह में गाइड करते हैं. सो सम रिसर्च एक्टिविटी आ जाता है. रिसर्च एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ाई का भी दायरा बढ़ जाता है. सो इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक्स यू हैड रेफरेंस बुक्स, यू हैड पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, अदर प्रिंटेड मटेरियल्स, न्यूज़पेपर्स. एंड देन व्हाट हैपेंड? Here also the student largely remained quiet and there was not much outcome with the exception of a few research outputs. Now in education 2.0 also we did not have much of technology. Then came education 3.0. 3.0 is when you had in the second half of the 20th century. Second half of the 20th century, the teacher's role changed and from guide and philosopher, the teacher became a collaborator. And what did the student become? The student collaborated with the teacher. In what things did they collaborate? They collaborated on projects.
तो अब क्या हुआ कि रिसर्च का दायरा और भी बढ़ गया. You had projects coming in, projects being taken up by the teachers, and those projects being handed out to the students, and together they are working on it. And obviously, the output will be positive. So that's education 3.2. There was more use of technology, more use of digitization. Then today we are in education 4.2. Now, what is the role of a teacher in education 4.2? Friends, today the teacher is not a sage, a teacher is not a guide or a collaborator. Today's teacher is a mentor. So we are supposed to be mentors and our students are supposed to be our mentees. That means we are supposed to take care of all round development of our students. It's not only the academic development or the uh, cognitive skills of the students. It is to do with the physical, moral, ethical, spiritual, social, cultural, everything, all development of the students. तो अगर आप सोचे कि मैं कॉलेज में जाके या इंस्टीट्यूट में जाके मैं अपना पढ़ाना जो है उसको करके अपने रिसर्च वर्क करके देन माय जॉब एंड्स. Unfortunately, friend, your job doesn't end. You are supposed to be a mentor to the student. So if your student is having any sort of problem or needs any sort of support or counseling, you are the one who has to give that to your students. Because in India, uh, people are very reluctant to seek help. So it's our duty as teachers to extend help to them. Now I come to the concept of holistic education. Friends, if you have any questions or any disagreements till now, whatever I have said, you can put it in the chat box, or you can even raise your hands and I'll take up your question. So I now come to the concept of holistic education. और जैसे कि मैंने कहा कि एंशिएंट एजुकेशनल सेंटर्स के पिक्चर्स यहाँ पर है, नालंदा एंड तक्षशिला. In ancient educational centers, we had a system of holistic education. We also had multidisciplinary education. Everything was taught to the people over there, to the students who went to study over there. From chemistry to carpentry, from astronomy to architecture, from music to mathematics, सब कुछ एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता था. तो अगर ये ऐसा है कि तब हो सकता था, तो अभी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? Now this is the question, that why now it's not possible. So I move on to the next thing, that is the literature of ancient India. बाना भट्टा का एक बुक है कादम्बरी. बाना भट्टे के उस बुक कादम्बरी में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि 64 कलाओं के बारे में कहा गया है. 64 colors. Now what are the 64 colors? 64 colors are not only arts. They are kala doesn't mean arts only. It can mean soft skill, it can mean liberal arts, science, vocational, fine arts, anything. Now, if ancient India knew of so many kalas, 64 कलाओं के बारे में ancient India को पता था, then this idea of or the idea of colors or having so many different types of subjects is not new to India. अगर हम holistic developments के recent models को देखें, because in the West we are having a lot of these holistic education models, especially in countries like Germany. In a country like Germany, we have this type of models of holistic learning. Humboldt was a German who first introduced this. तो इस मॉडल में आप देखेंगे कि one is
experiential learning, that is hands-on experience. So holistic learning means that there will be some experiential learning. There will also be some self-guided learning. Everything will not be taught by the teachers. Students will learn themselves. We have to just guide them, and they have to do their learning themselves. It is not expected from a teacher to be one who will dictate notes in the class or who will just give lecture and move on. A teacher will initiate students to think and then give them assignments which are, sorry, and then give them assignments which are uh, which are to do with, lateral thinking, problem solving. Then the third part is the interdisciplinary coursework. इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सवर्क में जो हम मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करते हैं, दैट इज ओनली इंटरडिसिप्लिनरी, कि कोई भी रिसर्च, कोई भी पढ़ाई किसी एक डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं होगी, हर चीज इंटरडिसिप्लिनरी होगा, क्योंकि हर देश में पढ़ाई इंटरडिसिप्लिनरी ही होती है. जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स के बारे में भी उनकी जानकारी होती है. Unfortunately, in India, we are very proud that because I am a student of history, I know nothing of maths, and because I am a student of chemistry, I know nothing of literature. That is not the case. We have to have a multidisciplinary or of course interdisciplinary approach to study. And the fourth one, if you see, the fourth one is community schools, which means that we need to be connected with the society at any cost. Whatever we are learning, that has to be given back to the society in some form or the other. Now there is this picture of a man called Macaulay, Thomas Babington Macaulay. ये Thomas Babington Macaulay जो थे, many of you know about him, most of you have read about him. He is the father of modern education in India, because when the British were in India, they realized that they needed Indians to assist them in administrative work. ब्रिटिश अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास लोगों की कमी थी, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी थी. So to make the workforce skilled, they needed first to educate them. Now to educate them, they needed money. So by Charter Act of 1813, 1 lakh rupees was kept aside to educate the Indians. Now, how to educate the Indians? In which language to educate the Indians? There were two contrasting views. One was the view of Orientalists, who felt that Indians should be taught should be educated in their own mother tongue, and others felt that no, Indians should be educated in English, because after all, we needed people who knew English and who could help the British administration. Now, when this debate was going on, this man, Macaulay, he arrived in India, and he justified the use of English as a medium of instruction. Macaulay का ये व्यू था कि Indian literature इतना पुअर है, and it is so limited कि it fills only one shelf of a European library. But that was his ignorance of Indian knowledge system. आज जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि it is so vast. But this man had no idea, and so he said that since Indian knowledge system is very limited in content, so it's better to give them instruction in English and let them learn English. And friends, this is how we accepted and adopted English as our official language. Until today, हमारी जितनी भी पढ़ाई होती है, स्पेशली हायर स्टडीज की पढ़ाई, सब इंग्लिश में होती है, and it's international also. No harm about it, but what it has done to us today, where we are standing, we need to think. Historical roots of education को अगर हम देखें, तो स्कॉट फोर्ब्स कहते हैं कि yes, holistic education is the right form of education. Why? Because तीन चीजें हैं, आप देखेंगे यहाँ मैंने लिखी है. It educates the whole student. It does not educate a part of the student. ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को सिर्फ हम लोग बोलना या लिखना सिखाएं, उनको सोचना भी सिखाएंगे,
उनको मैथमेटिक्स भी सिखाएंगे, उनको टेक्नोलॉजी भी सिखाएंगे। ये होलिस्टिक एजुकेशन। Educate the student as a whole. We are educating the student as a whole and not as a part. हमारा मकसद ये नहीं कि स्टूडेंट को हम किसी एक चीज में ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उसको ये सोच के ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो एक संपूर्ण इंडिविजुअल है. He goes back to the society as a complete individual. And third is see the student as part of the whole, which means that the student is part of the global community. तो वो भी हम देखते हैं. Hence, this form of education is the right form of education. और इसका origin कहाँ है? Ancient spiritual tradition and cosmologies में भी इसका ancient है. And mind you, it is not synonymous with New Age education or it is not a product of counterculture. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, all these are new age movements और काउंटर कल्चर मूवमेंट. बट होलिस्टिक एजुकेशन कभी भी काउंटर कल्चर नहीं है, ये पहले से था and is very much part of the culture. So friends, now I will tell you about the philosophers who helped and guided in shaping up NEP 2020. लेकिन इससे पहले मैं जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेके देखना चाहती हूँ कि किसी के पास कोई भी सवाल या कोई भी अगर सजेशन है, या इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग प्लीज गो अहेड. इफ बिकॉज I will now move on to the philosophy of holistic education. किसी को कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं. I hope friends you are there. There are 68 people in the room. Can I get some response? Yes, no, kuch bhi? Yes, ma'am, you can proceed. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm still waiting for your Yes, ma'am. interaction. Let me see. Let me see कि आप लोगों को पहला सेशन जो है वो आप लोगों को कितना जगा के रखता है. Okay, so again I am going to that portion where philosophers who guided NEP. तो पहला वाला है स्वामी विवेकानंद. तो स्वामी जी का फिलॉसफी ये था कि सविद्या य विमुक्ति, मतलब knowledge liberates. Knowledge liberates one from what? It liberates one from ignorance. It liberates one from illiteracy. It liberates one from narrow-mindedness. तो जैसे आप नॉलेजेबल होंगे, आपके पास नॉलेज आएगा, आपका मन जो है वो खुल जाएगा. Your mind will open up and it will accept changes. It will accept what is good automatically. Second, he said that there are 3 things which are essential, and that is idealism, naturalism, and pragmatism. And idealism is something that a student's life, an ideal student's life, must be the right combination of a good body, of a healthy mind and a healthy body, or a good mind and a good body. That's ideal situation. So you cannot just allow the students to be healthy physically but mentally sick, or you can't just allow them to be mentally very bright and physically very unhealthy. So एक ideal combination चाहिए, and that is what he said. That is the aspect of holistic education. Second is naturalism. ये जो naturalism है, every person should learn to appreciate natural propensities. You cannot live without nature. It has to be accepted in its present form. और natural propensities को भी हम लोग को accept and appreciate करना है. And the third one is pragmatism. One has to be pragmatic in approach. Pragmatism का मतलब ये हुआ कि you cannot just look towards the future and ignore the past. At the same time, you cannot
look towards the past only and ignore the future. It's pragmatic to have the right balance of ancient and the modern. That is pragmatic. लेकिन विवेकानंद के इस आइडिया को हम लोगों ने छोटे छोटे मॉड्यूल में डाला है. हम लोगों ने इनके टीचिंग्स को जेंडर इक्विटी में डाला है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया में डाला है, ग्लोबल सिटीजनशिप में डाला है, एनवायरमेंटल एजुकेशन में डाला है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. नेक्स्ट इज टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर. उनका ये कहना था कि जो हाईएस्ट एजुकेशन है ना, वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता, बट हमें सिखाता है हाउ टू लिव लाइफ in harmony with all existences, which means that we are a part of nature and we have to learn to live with nature. He focused more on interdependence and not independence. आपको ये बात पता होगा कि when Rabindranath Tagore was there, India was not a free country. Yet he did not speak of independence, but he spoke of interdependence and communal harmony. उनका ये कहना था कि if we all live together and we are mutually interdependent on one another, then no one can destroy or break us. And that is taught in some small modules that we have prepared in NEP in the term of global citizenship, in the paper environmental education, and so on and so forth. मेरा कहने का मतलब है कि we have started some new subjects, and these subjects are based on the philosophy of these great people. Third is Madan Mohan Malviya. Madan Mohan Malviya started the Banaras Hindu University. Banaras Hindu University is an epitome of Indianization, and he was a patriot and an out national. He was a patriot national leader. So he emphasized on communal harmony. उनका ये कहना था कि we have to be first united communally. If we keep on fighting amongst ourselves, then we are trying to be diverse. We should be unified. जो उन्होंने कहा, we are teaching that in global citizenship. That is a subject which is taught, and Madan Mohan Malviya's teachings come largely in that. Also, because he was a patriot and an out Indian, there is a paper called Understanding India. In here also, Madan Mohan Malviya's teachings are taken in a big way. Now I will come to UNESCO's 4 pillars of learning in holistic education. So friends, up to now I was telling you about Indian philosophers and how they've influenced holistic education in India. But actually when we go a bit further, we come to know that UNESCO also has its own 4 pillars of learning in holistic education. Now the first pillar is learning to learn. आप ऊपर देखिए, learning to learn is the first pillar according to UNESCO's 4 pillars of holistic education. Now learning to learn means what? Learning to learn means learning to ask questions. What questions? Not questions just for the sake of asking questions. मैंने आपसे कहा कि आप मेरे से सवाल कीजिए और आप कुछ भी सवाल करें. That is not the requirement. The requirement is you learn to question based on scientific reasoning. So आपका एक scientific reasoning हो, awareness हो, and then you ask question. And when you ask question, only then you will seek answers. So हमारा system of education, friends, if you just notice, we have stopped asking questions. हमारा जो pattern है ना, वो भी अजीब है.
हम लोग क्वेश्चन जब सेट करते हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं एक्सप्लेन दिस, डिस्क्राइब दिस, तो हम कभी भी उनसे कोई भी रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछते ही नहीं है. So they don't know how to reason out, how to ask question. But that is the first requirement. So questioning, to develop the art of critical thinking, to have problem solving expertise, we need to know how to learn. Second one, if you see on the right of your screen, learning to do. Here, learning to do means basically it's vocational education. जो भी आप सीख रहे हैं अपने हाथ से कर रहे हैं. If you do it with your hand, what will happen? You learn the skill, and at the same time you learn to do it jointly with the help of others. You learn to take initiative and finish the work. You learn to become a team leader. You learn to finish in time, and you are accountable and responsible for the job. Third is learning to live. Learning to live. The third pillar you can see to this in the southern part of your slide. Learning to live. Now, learning to live means how to live without any discrimination, any intolerance, okay, any stereotyping, any without being judgmental. What happens is we don't know how to live and let others live. तो एक कहावत है हिंदी में, जियो और जीने दो, उसी को हमको फॉलो करना है. If you have to learn how to live, you have to learn how to live with others. Rather than being judgmental about them, rather than stereotyping them, we have to accept them as they are. And the final pillar is learning to be. Learning to be means you are learning how to be a part of the global community, a part of the universal community. So that is learning to be. If you learn how to be a part of the universal community, you will learn to give up intolerance. You will become more tolerant. You will become more peace-loving, and you will accept everyone with open arms. And that should be the motto of all the students. If we can teach our students to be so open as to accept everything with a broad mind, with an open mind, then the world will be a better place to live in. The second theme, friends, is multidisciplinary education. तो होलिस्टिक मैंने खत्म कर दिया है. होलिस्टिक पर अगर आप लोगों में से किसी का कोई भी सवाल हो या आपका कुछ भी शेयर करना है, तो यू कैन जस्ट शेयर इट विथ मी. किसी का कुछ है? Anything you have, any doubts in holistic, or you would like to share something, friends? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So you are done with holistic. अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम जवाब दे देंगे, नहीं? क्योंकि आपको इसके बाद एग्जाम भी देना है. So you will get questions. That's why I'm asking you. Anyway, if you don't have any questions, it's fine. I'll just move ahead. Okay, so multidisciplinary education. अब हम बात करेंगे मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की. होलिस्टिक तो हो गया, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, सो आई होप यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. बट इन केस यू हैव क्वेश्चंस, आई एम विलिंग टू टेक अप योर क्वेश्चंस. तो ऐसा है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है उसमें हम स्टार्ट करते कि हमारे पास क्या था एंड हमारे पास अभी क्या है या हम क्या एम करते हैं.
So if you see on the left hand side, we had multidisciplinary curricular, and now what we are doing multidisciplinary education. तो दोनों में फर्क ये है कि करिकुलर अगर मल्टीडिसिप्लिनरी है तो उस करिकुलर में हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं. ओके, बट now that we are having multidisciplinary education, we are actually combining different subjects as per the desires of the students, so that they get a wider choice. So then we have subject specific studies. पहले हम लोग का ये था कि अगर साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है then we had to study physics, chemistry, मैथ्स, बायो और बॉटनी, zoology या फिर अर्थ साइंसेस भी. तो साइंस मतलब वही है. सोशल साइंस अलग होता था, ह्यूमैनिटीज अलग होता था, कॉमर्स अलग होता था. हम कभी भी कॉमर्स के साथ साइंस को कंबाइन नहीं करते हैं, करते थे, but now we can do that. How? Supposing you are studying a subject like botany, you can study sociology, जो कि एक social science का subject है, you can study it with that. So this liberty is now being given. साथ ही साथ हम एम करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रॉस डिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग की. ऑल्सो हमारा करिकुलम इनोवेटिव होगा एंड अबव ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड वैल्यू बेस्ड. अब कम्युनिटी एंगेजमेंट क्या होता है? Whatever you are teaching your student in the class, let the student go back to the society and give it back to them. So you can ask your students to look around and collect the most important problems of the society and think of solutions of the problem. तो इस तरह ये कम्युनिटी एंगेजमेंट कर सकते हैं. Holistic and multidisciplinary education will aim to develop all capacities of human beings, चाहे वो intellectual हो, aesthetic, social, physical, emotional, moral, कुछ भी. It is not limited to one particular part. It is something that is more integrated in nature, and it will enter into professional, technical, vocational, all types of discipline. Then there will be imaginative and flexible curricular structure. Also, there will be multiple entry-exit point as well as RPL or recognition of prior learning. So, multiple entry-exit points का मतलब ये हुआ कि students can enter and leave whenever they want, which means that if a particular program is of 4 years, the students get a bonus of 3 more years to complete their graduation. Now for that, they can make an entry and then leave midway, do a course or do some job and come back again and finish the course. तो ये flexibility पहले नहीं था, अभी हम उनको ये देते हैं. Also, RPL means recognition of prior learning. तो उसमें ये है कि we are giving leverage to those people who have studied and are coming back to finish their education. वो भी बहुत important है. पहले इसको recognize नहीं किया जाता था. Now we are doing this. Now these are things, friends, you have to understand. RPL is very important, which was not there before, and RPL leads to lifelong learning. So NEP says that we are now giving lifelong learning opportunities to the students. How is it possible? Through RPL. How is RPL possible? Through MEES, multiple entry exit system. How is MEES possible? Through ABC or academic bank of credits. So it's a cyclic and holistic approach to education that we are following. Also,
certain subjects like say philosophy, Indology, art, science, which did not have much students before, did not have much takers. Now these will also become important subjects as there will be more and more people who will take up this. Now we come to the main thing that every student should aim for moksha. Moksha means what? Moksha is that liberation. And that is not the liberation that one seeks at the end of the life, because 21st century education में भी पुरुषार्थ है. There has to be a purpose of life. आपका लाइफ का पर्पस जैसे धर्म है, राइटियसनेस, लॉ, ड्यूटी और मॉरल वैल्यूज, वैसे अर्थोपार्जन भी है. Artha will also be there, wealth will also be there, karma will also be there, which is psychological or pleasure values. But at the same time, we all aim for moksha or liberation. And to get that liberation, we have to have the right balance of pedagogy and philosophical orientation. So, how do we attain this? हमारे पास यही रास्ता है. We have credit based courses, we have projects, so that there are engagements in community service. We give them environmental education, value education, global citizenship. We also provide internship with local industry and integrate humanities and arts with science and technology. तो पहले जो STEM subjects था, science, technology, engineering, mathematics, they are now termed as STEAM subjects. You will include art and entrepreneurship also. NEP और क्या बोलता है? NEP बोलता है कि either 3 year या 4 year का डिग्री होगा, उसमें multiple exit options होंगे, appropriate certification होगा at every level, okay? But हम ये उम्मीद करेंगे that the students will continue with education for 4 years. जबकि option है to leave in between. If they leave after 1 year, they will leave with a certificate. If they leave after 2 years, they leave with a diploma. If they leave after 3 years, they leave with a degree. And if they leave after 4 years, they leave with a degree with honors or a degree with research. So the aim will be to keep them for 4 years. Then there is another component, that is ABC, Academic Bank of Credit Mechanism. वो क्या है? Now ABC is a virtual or online entity जो कि Ministry of Education establish करते हैं. That will help to facilitate students to become academic account holders. So that is also important. What is academic account holders? जैसे कि बैंक में हमारे accounts होते हैं and we go and we take out money because the money is in our name. Similarly, the credits that the students will earn will be in their name, and they will be able to transfer their credits whenever they want during their lifetime from one institute to another. और क्या है? NEP में मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगी, हमारा ग्रॉस एंड अगेन RPL और लाइफ लॉन्ग लर्निंग दोनों को हम encourage करेंगे. एक ये भी आता है कि when you are doing so much, how do you change the ecosystem of your college? तो आपके कॉलेज में कुछ चीज़ें आ जानी चाहिए, जैसे कि स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे, या आप हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म में दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट कीजिए, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कीजिए, so that there is greater industry academia linkage, and on the whole there is the whole approach is interdisciplinary. So holistic education का aim है कि to set up highest global standards. India will become a विश्व गुरु, that we are saying, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोल भी दिया और हम लोग इसको मानने लगे हैं कि we will become विश्व गुरु. But विश्व गुरु बनने के लिए जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी नहीं है. वी नीड टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, इंक्रीज क्रिएटिविटी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए, टीम वर्क एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स होनी चाहिए, एंड मॉरल एंड सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए.
to develop all capacities of human beings, well-rounded individuals that possess critical 21st century capacities. They should be, that should be the aim. That is what we are looking for in holistic education. ये फ्लो चार्ट ऐसे दिखेगा that you will have an imaginative and flexible curriculum which will help you to produce graduate, master or doctoral students. They will have rigorous specialization in one subject. Sorry. And then it will be cross-disciplinary or interdisciplinary nature. And finally, you will stimulate Indianness and global concerns by incorporating subjects like global citizenship or understanding India. I now come to the last portion, that is human values, ethics and personality development in environmental education. I hope, friends, you are keeping your questions, your suggestions, your observations ready, because जैसे कि मेरा खत्म होगा मैं expect करूँगी that I get a few questions, otherwise ये पूरा बेकार हो जाएगा. So friends, even if you are having a nice rest in this afternoon, please wake up, क्योंकि ये सबके लिए important है कि we interact. Now Ma'am, there is I have a ethical question. deterioration. Yes, surely. I'll take up the question. You wanted to know? Okay, I just please. जैसे यस मैम, जैसे आपने बोला था हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें क्या अपन ये गिन सकते हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है? बिल्कुल, फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन को हम लोग तो बिल्कुल गिनेंगे. और हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे की मदद करना. तो दो इंस्टीट्यूशन के बीच में हो सकता है, इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में हो सकता है. तो दैट इज द हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म. ओके, मतलब वो वहाँ का जो उनका डिसिप्लिनरी सिस्टम है वो यहाँ पे ये करेंगे, या फिर जो उनका करिकुलम नहीं है सर. ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ ना जो कोलैबोरेशन अभी हो रहा है, उसमें दे आर जनरली कोलैबोरेटिंग ऑन सर्टेन थिंग्स, that there will be certain lectures or there will be certain courses that they will run, or there will be certain certificate courses that they want the students of both the countries to participate in, or there will be certain programs like life skill development and all for students. इस तरह के होते हैं सर. उनका सिलेबस हमारा सिलेबस एक हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा. उनका अपना है, हमारा अपना है. हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म में कुछ चीजों में they will collaborate with us. Jointly आप conferences कर सकते हैं, workshops कर सकते हैं, lecture series कर सकते हैं, student exchange program चला सकते हैं, faculty exchange program चला सकते हैं, depending on what your MOU is saying. Okay ma'am. Okay sir, thank you so much Vipul sir. At least I got a question. I'm so happy that I could answer it. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो ये वाला है द लास्ट पोर्शन. या सो हियर ये जो एथिकल डिटेरियोरेशन हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, इसमें हम जो चीजें सामने आती है, दैट इज देयर इज लैक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द टीचर एंड द स्टूडेंट. The teacher does not know what the two students' background is, what problem the student is going, or what the student's financial status is, or what the personal details are, because the teacher has no time to take interest in that. उसके पास already इतना workload रहता है. There are too few teachers and too many students. Intake बढ़ता जा रहा है students का, लेकिन teachers का recruitment नहीं होता है. तो हम interpersonal relationship तो expect ही नहीं कर सकते हैं. दूसरी चीज है कि कमर्शियलाइजेशन हो गया एजुकेशन सिस्टम में. देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज व्हिच हैव कम अप एंड व्हिच हैव वी चार्ज हाई फीस. Higher importance is given to materialistic achievement. If you tell your student that today I am going to tell you something about character building, immediately your student will say, ma'am, why don't you tell me something about placements or how I can do well in my career. तो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और दैट हैज टू हैपन बिकॉज अल्टीमेटली पीपल कम फॉर हायर एजुकेशन विद द पर्पस ऑफ गेटिंग अ जॉब. देयर इज वेरी अनहेल्दी कंपटीशन आल्सो.
Everyone is expected to do best, which is not possible. There is pressure of curriculum completion on us and evaluation also. हर दूसरे महीने में तीसरे महीने में एग्जाम होता रहता है. आई डोंट नो अबाउट महाराष्ट्र, लेकिन हमारे झारखंड में तो ऐसा, रांची यूनिवर्सिटी इज ओनली हैविंग एग्जाम. हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता है कि हम सिलेबस खत्म करें कि दूसरा एग्जाम आ जाता है. उसके बाद उसका इवैल्यूएशन होता है, फिर अगेन जब से हम पढ़ाना शुरू करते हैं उसके बाद दूसरे एग्जाम का डेट आ जाता है. Then there is indifference towards environmental and societal issues because students are very reluctant to look beyond their own life. There's minimum exposure to practical learning and skill development, and ultimately there is commercial tutoring. तो इन सब की वजह से there is ethical deterioration. साथ ही साथ सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी में people have become वेरी इम्पेशेंट, वेरी इंटॉलरेंट. कुछ भी होता सुइसाइड करते, डिप्रेशन में चले जाते. साथ ही साथ द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी रैपिडली. ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, मॉरल कैरेक्टर ऑफ पीपल आर डिटोरेटिंग, वैल्यू सिस्टम इज गोइंग फॉर नट्स. अभी सोशल मीडिया का हाल देखिए. सोशल मीडिया में कोई कुछ बोलता है, उसको लेके कितना कुछ हो जाता है, और सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी बोल देता है. ये भी तो हमारा वैल्यू सिस्टम तो एकदम खत्म हो गया है. अब हमारे सामने है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है, कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम और ट्रेडिशन के वैल्यूज है, और कुछ ऐसे वैल्यूज है जो कि वर्ल्ड क्लास है. वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, ग्रैटिट्यूड, पीस, हार्मनी, कंपैशन, दीज आर यूनिवर्सल वैल्यूज. ये कोई कंट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है. ये तो सबको पता होना चाहिए. सेकेंड वाला है इंडियन नॉलेज सिस्टम. इंडियन नॉलेज सिस्टम का अपना एक वैल्यू सिस्टम है. वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी टेक केयर ऑफ आवर एजिंग पेरेंट्स, वी लुक आफ्टर आवर चिल्ड्रन. दैट इज आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम. एंड द थर्ड थिंग इज वैल्यू गाइडेड स्किल्स जो होते हैं. अब विदेश में जब जाते हैं तो हम क्लेanliness और हाइजीन को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, वही चीज जब हम इंडिया में आते हैं तो भूल जाते हैं. So all these things are important for human value based education. साथ ही साथ आता है the concept of वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारा concept है. It talks about inclusivity, peace, tolerance, global citizenship. The world is one family. अगर हम सब इसको मान के चले, then there will be no war, there will be no intolerance. So how do we go forward? The best way to go forward is to connect with each other. In fact, we are doing that. We are connecting with each other. We are also being inclusive. Being inclusive means you are including everyone in your desire to give a holistic and multidisciplinary education to the next generation. And how do we create a perfect balance? We create a perfect balance with the right pedagogy and the right philosophical orientation. So that is the way forward. And NEP क्या कर रहा है इसमें? Again, I'm coming to this. NEP ये कहता है कि 2030 तक हर डिस्ट्रिक्ट में एक HEI होगा जो कि मल्टीडिसिप्लिनरी होगा. ये भी कहता है कि सारे इंस्टीट्यूट्स मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाएंगे by 2040. थर्ड ये कहता है कि there will be research intensive universities, teaching intensive universities and autonomous degree granting colleges. ठीक है, तो ग्रेजुअली हमारा टीचर्स एजुकेशन भी मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाएगा. ये जो बीएड कॉलेजेस अभी जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बन जाएंगे मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस. तो हमारे जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड लर्निंग हाउ टू लर्न. तो फ्रेंड्स, मैंने यूनेस्को के 4 पिलर्स में आपको बताया था कि लर्निंग टू लर्न, तो ये वाला हम लोग को सिखाना है. सेकंड कि हम कैरेक्टर बिल्डिंग करना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं. वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स हमें चाहिए जिसके पास 21st सेंचुरी स्किल्स हो. फॉर दैट वी नीड टू रीओरिएंट एंड रिवैम्प द पेडागॉजी and also specific set of skills and values across all domains should be integrated. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्किल सेट देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को,
to make sure it is region specific. महाराष्ट्र का स्किल सेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम असम का स्किल सेट. तो असम के स्टूडेंट्स को अगर आप स्किल्स देना चाहते हैं, दैट शुड बी रेलेवेंट विद द स्किल्स दैट आर देयर इन असम. सो एंड महाराष्ट्र का वाइस वर्सा. इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले हमको करिकुलम को कम करना है. अब करिकुलम तो हम कम नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाने का तरीका कम कर सकते हैं. वी फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स and learning can be in an interactive manner. It can be experiential. Instead of going to the class and trying to give them lecture and finishing the syllabus, give them assignments which are interesting and also which will help them learn by themselves. फिर ये है कि हमारे पास होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम वाइड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज दे रहे हैं. We are also not separating between arts, science, curricular, extracurricular, co-curricular, ये सब नहीं कर रहे हैं. फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, क्राफ्ट, वोकेशनल सबको साथ में रख रहे हैं. मतलब एक और वो साइंस जो भी पढ़ेगा, ह्यूमैनिटीज भी, मैथमेटिक्स भी, सब कुछ, डिजिटल लिटरेसी भी, सब कुछ. तो इन सब चीज़ों को कहने के बाद मेरा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये होगा कि फ्रेंड्स, इट इज़ द पावर ऑफ कलेक्टिविटी एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस. आज हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं. मेरा जो कुछ समझ है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी इसको सुन रहे हैं. मनी मन इसको या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वॉट एवर वी डू इट कलेक्टिवली. अगर हम एकजुट होके करेंगे तो तभी हमें सक्सेस मिलेगा. हो सकता है कि दिस NEP 2020 विल may or may not stand the test of time, but we have to give it a try, and that too in a collective manner, and that is the principle of success, and that is the law of modern education. Because friends, no one truly wins unless we all win. अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हमें क्या फर्क पड़ा है, हम नहीं करेंगे, तो ये वी कैनॉट गो अहेड. और इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी है कि एक फार्मर थे जो हमेशा प्राइज जीतते थे अपना फसल के लिए. उनके पास जो फसल उगाते थे, he used to get the first prize. But what he did was he shared the seeds of his crops with his neighbors. Every time he got the first prize. So once his neighbors asked him that, why are you sharing your seeds with us? You always win the first prize. Why do you want to share that with us? So the farmer says that it is for my benefit that I am doing. Because if you are growing inferior variety of seeds and those seeds are coming to my farm, then my farm will also not get the first prize. तो फ्रेंड्स, अगर हम एक्चुअली चाहते हैं कि अच्छा हो इन द लॉन्ग रन, तो हमें इस जैसे कि इस फार्मर ने स्प्रेड किया था सीड्स, हमें भी वही करना है, क्योंकि तभी फसल जो है वो सही रहेगा, बरकरार रहेगा. एक और हम कर रहे हैं और दूसरी ओर हम नहीं कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट गिव अस सक्सेस एट ऑल. सो दैट इज द मंत्र ऑफ सक्सेस. And the truth is that no one wins unless we all win. So friends, with that, I've already stopped my presentation. I now look forward to your queries, your suggestions, your answers, जो भी आप कहना चाहते हैं. I already had a question from Vipul sir, and I'm so happy to have been able to answer him. Anyone else who would like to ask any question, you're most welcome. Can I ask a question? Yes, please. Ma'am, this is regarding, you said that region-specific skills. Region-specific skills. Domain, domain-specific skills. Like you said, there will be a different set of skills required for Assam and different for Maharashtra. So, can you just throw light on this statement more? I'll tell you, sir. Yes, ma'am. In Assam, like Kasar is there, then bamboo.
bamboo things. Now, see, bamboo grows over there. Tasar is grown over there. So, if you give the students skills which are related to those things, then they will be able to earn a livelihood. On the other hand, in Maharashtra, the Marathwada region grows lot of cotton. It grows lot of flowers like you grow sunflower, you grow roses. So floriculture, that is another skill that is exclusively. You can't have floriculture in Assam. So that skill can be given to the students of Maharashtra region. Also in Maharashtra, the Konkan region. Konkan region is actually the seashore area. So seashore area में skills like fish preservation or fishing related skills that can be given. So that is a domain specific, a region specific skill. So what works in Kashmir will not work in Karnataka. Now we are a very diverse country. तो हमको ये देखना है कि जो ऐसा स्किल दे जो कि उस सोसाइटी के साथ सही बैठे, वो बच्चा जो है वो सीख के वो कुछ काम कर सके. Is it okay, sir? Yes, thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Ma'am, I have another question. Yes, Vipul sir, please. आपने मैम इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बात की थी स्लाइड्स में, ओके? तो उसे अपन एनईपी में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? लाइक देखिए, सिचुएशन है ऐसा कि आजकल पहले कैसे जॉइंट फैमिली रहती थी, लोग बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बट आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है एंड उसमें भी बच्चे अपने माँ बाप को साथ में नहीं रख रहे हैं. इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो अपना पहला था उसमें कैसे माँ बाप के साथ रहना ही पड़ता था, तो उसको अपन कैसे मतलब बच्चों को समझाएंगे कि माँ बाप आपके भगवान है, आप उनके साथ ही रहेंगे? सर, इसका एक बहुत आसान तरीका है. मैंने आपसे ये भी कहा कि एक्सपीरियंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ पार्ट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन. यू टेक योर स्टूडेंट्स ऑन अ ट्रिप टू एन ओल्ड एज होम. किसी ओल्ड एज होम से कनेक्ट कीजिए, स्टूडेंट्स को वहां लेके जाइए और उनको वहां allow them to spend a few hours with aging population. वो खुद ब खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, एंड देन यू आस्क देम टू गो बैक टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. ये जो आपने बोला ना कि अभी न्यूक्लियर फैमिलीज है, जॉइंट फैमिली है, ये तो आप इसको ना कभी भी उनको बोल के समझा नहीं सकेंगे, बिकॉज they have never experienced this. They are born in nuclear family, they have never experienced the presence of their grandparents. But what a grandparent goes through, that they can experience when they visit an old age home. So I would request you all to connect to the society. That is NEP's main thing कि आप students को ना experiential education दीजिए. जो भी आप experience करना चाहते हैं तो दीजिए. उसका आउटकम ये होगा कि when students come back, no, they will have some, you make them write papers. एक रिसर्च पेपर लिखने बोलिए, असाइनमेंट दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस ऐसा कैसा रहा और क्यों रहा. उसको इससे उसका क्या होगा, उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, उनका एनालाइजिंग पावर बढ़ जाएगा, एट द सेम टाइम उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा. सो दैट इज हाउ यू कैन डू इट, सर. ओके मैम, थैंक यू. थैंक यू सर. Anyone else? अच्छा रहा मैडम सेशन. थैंक यू मैम सो मच. और मेरा और एक सेशन भी है. Yes, madam. On 22nd we will meet once again. We will meet once again. और आज तो 2-3 लोगों ने इंटरेक्ट किया, उस दिन तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा, आई एम श्योर. Yes, madam. Activity based session रहेगा वो तो Activity ज्यादा. based होगा. Thank you so much. Thank you once again, प्रीति मैम, बेटे सर, आप दोनों को बहुत बहुत थैंक्स. Thanks to all the participants for listening so patiently to me. I feel very humbled, very honored. So Thank you. so much. Thank you so much, madam. On Thank you behalf so of much, all ma'am. of us. Thank you, madam. Thank you, sir. थँक यू. फ्रेंड्स, ये सेशन अपना थोड़ा जल्दी खत्म हुआ है. आप 5-10 मिनट का रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले सकते हैं विदाउट लीविंग द मीटिंग. प्लीज डोंट लीव द मीटिंग, जस्ट रिफ्रेश एंड कम बैक. We will start our session once the resource person has joined. Okay? So please don't leave the meeting, just take refreshment break and stay connected. Thank you all of you.